Hello and welcome to Coffee with Correspondent. I am Aisha Sadiqa. And I am Faraz Saeed, and we're going to use this segment, Coffee with Correspondent, to highlight issues, human stories that matter but hardly talked about. Issues which revolve around rape, issues which revolve around human rights, women rights, and a lot of other issues. Today's darkest story that I feel is about four friends, where one of the friends is the victim and three of the friends are the perpetrators. And surprisingly, all of these friends are men, male, 21 years old, and three of the friends rape the fourth one. Let's find out story mein hai kya or what are the implications. So what happened was कि लाहौर के डिफेंस एरिया से कुछ आगे एक घर में ये चार दोस्त यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं. ये जाते हैं वैसे ही हैंग आउट करने के लिए, पार्टी करने के लिए, जैसे कि मोस्टली दोस्त जाते हैं. लेकिन उनमें से तीन दोस्त मिल के चौथे का रेप कर लेते हैं, ये कहते हुए कि वो लड़का बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, बल्कि वो ट्रांसजेंडर की तरह दिखता है. सो यहाँ पे ना सिर्फ उसका रेप किया जाता है, बल्कि उसके रेप करते हुए उसकी फिल्म भी बनाई जाती है ताकि बाद में उसको ब्लैकमेल किया जा सके. सो आई बिलीव कि दिस वाज अ वेल प्लान्ड इंसिडेंट, जिसके अंदर उन्होंने सोचा हुआ था कि अगर हम इस तरह का कोई स्टेप लेते हैं, हम इसके साथ जरूर, वैसे प्रॉबली दे वुड हैव थॉट कि शायद वो मान जाए, लेकिन अगर नहीं मानेगा तो हम उसकी वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल कर सकेंगे ताकि वो किसी भी लीगल केस से, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकें. And the issue is that the family is in trauma and the family plans not to pursue this case, which is the normal thing. कि किसी भी rape incident के अंदर, specifically male rape के अंदर, the victim or the victim's family do not report cases because again we have an issue with legal ideas reporting, and we'll also discuss this आगे जाके. यहाँ पे ये भी बात आती है कि हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि यहाँ पे औरतें इस तरह के केसेस रिपोर्ट करते हुए डरती हैं. तो एक आदमी जिसके साथ ये स्टिग्मा है कि उसका तो रेप हो ही नहीं सकता, वो तो एक स्ट्रॉन्ग बीइंग है, कोई यू नो मीन ईगो के साथ मैस्कुलिनिटी, आपकी पेट्रियार्की ये अलाउ ही नहीं करती है कि एक आदमी के साथ भी इस तरह का कुछ हो सकता है. So, एक तो इसका जो एंगल है वो ये है कि हाउ वेरी सीक्रेट रिलेशनशिप जो फ्रेंडशिप का होता है, एक तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कैसे फ्रेंड्स एंड अप रेपिंग अनदर फ्रेंड जस्ट बिकॉज ही वाज क्यूट और ही लुक्ड लाइक अ ट्रांस. एंड द डिलेमा हियर इज कि उनमें से दो दोस्त जो थे, जो तीन दोस्तों ने उसको रेप किया है, सारी यूनिवर्सिटी के दोस्त थे, लेकिन उसमें से दो दोस्त उसके साथ बचपन के दोस्त थे, उसके साथ स्कूल जाते थे. एंड so it wasn't elongated पुरानी दोस्ती थी, बचपन की दोस्ती थी. एंड one interesting thing was कि they were not drunk. In fact, after the victim went through the ordeal, they then decided to get drunk and celebrate whatever happened. और उसके बाद the parents have not. So लोग जो कहते हैं कि इंटॉक्सिकेशन के इफेक्ट में आके उन्होंने किया, they were under some influence या कुछ, तो इस तरह का कुछ भी नहीं था उसमें. और अब सवाल ये होता है कि the family has decided reportedly कि वो उस लड़के को abroad ले जाएंगे for his physical wellness, for his mental wellness, because even they don't have such kind of confidence with the local doctors. Police reporting, because they haven't reported. So we're going to first discuss about कि legal इसकी remedies क्या हैं, laws क्या कहते हैं जिसकी वजह से हम लोग इतने ambiguous scenario के अंदर हैं कि a person who is a victim of rape will never want to file a case because a stigma, because again we live in a patriarchal society, और patriarchal society के अंदर men are men, quote unquote men are men, and men are defined as the epitome of power, the epitome of authority, the epitome of control, masculinity. And the research says that most of the victims जो मेल रेप का शिकार होते हैं, they don't report because again they fail to muster that masculinity in themselves. कि उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? It cannot happen to them. और society will not approve of them. The society will not accept the male victims of rape
क्योंकि अगेन उनके साथ तो एक ऐसी आइडेंटिटी लग जाएगी, बिकॉज अगेन दे विल नॉट बी कंसिडर्ड मैन, बिकॉज मैन की पूरी इंग्रेडिएंट्स जो है वो उनके साथ नहीं लगेंगी. बट लेट्स टॉक अबाउट, वी नो कि किसी भी रेप विक्टिम के साथ स्टिग्मा अटैच हो जाता है. स्टिग्मा अटैच हो जाता है. अगर उसने बता दिया तो उसका मजाक उड़ाया जा सकता है, या फिर हो सकता है उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया जाए कि ये तो नामर्द है, ये मर्द ही नहीं है. एंड आवर सोसाइटी हैज अ लॉट ऑफ पैथेटिक, बैड, वाइल्ड वर्ड्स, और आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट दोस वर्ड्स, बट हमारे एक दूसरे को बुरा भला कहने में पाकिस्तान सोसाइटी इज वेरी एक्टिव. Pakistan society is very active. I'm sure I have never used those words, but I've heard those words very commonly. Men talking about those words. In fact, हमारी society के अंदर sexual abuse, इसके अंदर एक और बड़ी important चीज़ है कि जैसे हमारे यहाँ सारी गालियाँ जो हैं वो सारी गालियाँ फेमिनिन वर्ड में यूज की जाती है. फेमिनिन वर्ड्स मतलब वो या तो माँ के इर्द गिर्द है या वो बहन के इर्द गिर्द है, और हमने सारी गालियाँ उस तरह बनाई हैं. सो हम लोग एक पर्टिकुलर जेंडर को या एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को जो भी फेमिनिन है, हमने उसको सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया है, और उसको किया है कि उनको गाली दे के वो अपनी मर्दानगी प्रूफ करते हैं कि अगर हम इस तरह की गाली दे रहे हैं यानी हम उसको टारगेट कर सकते हैं. देयर इज अ थ्रेट just because they are men. And just because this boy, a 21-year-old friend of those three wild men, the predators, just because he had those traits, the feminine traits, because he was cute. Men are not supposed to be cute. Can't men be? So this is again one of the stereotypes that a society face. And look, the dilemma is if somebody is cute, he should be raped. If somebody is feminine, he should become a sexual object of the masculine men. And that is the problem. So that's what shows. Again, यहाँ पे भी एक point raise होता है, यानी people, यानी if you're saying they are feminine looking या transgender looking, यानी मर्दों की नजर में feminine या transgender are only sex objects. They do not see them as anything else, as any of their fellow companions or fellow beings, human beings. उनको उस तरह भी treat नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ sex objects. Sex objects. और हमारी society के अंदर हम तो सेक्स वर्ड कहते कहते हमें लगता है कि एक टैबू है कि oh let's not talk about sex, whereas sex should be part of our education, sex should be part of our training, because again it happens, it is a natural phenomena. However, everything which has violations, everything which has जिसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट एंटिटी डाली जाती है, उसको हमने कंट्रोल करना है. एंड व्हेन सेक्स इज बीइंग यूज्ड as to enforce yourself on somebody, impose yourself on somebody, why not talk about it? Talk about it again. जो आपने बात की कि जब उसको खास तौर पे मैंने देखा है कि जब इस तरह के टॉपिक्स या किसी भी टॉपिक हो, जब उसको कहा जाता है कि इसके बारे में बात भी नहीं करनी, करना तो दूर की बात है, उसके बारे में बात भी नहीं करनी, एजुकेट नहीं करना लोगों को, तो people tend to get attracted towards that thing more. वो उसकी तरफ ज्यादा खींचे चले जाते हैं कि आखिर इस चीज में है क्या, जिसकी वजह से one of the reasons कि पाकिस्तानी बच्चों के दिमाग इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते इन चीजों की तरफ, इतनी ज्यादा उनको एजुकेशन नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है, while in terms of sexual experiences. So they try to explore, और उस exploration के अंदर they tend to get hyper, get aggressive and oppressive, जिसकी वजह से इस तरह के मतलब this is not the only reason, but I believe this is one of the reasons कि youngsters इस सब की तरफ expose हो रहे हैं. So that's right. लेकिन अब issue ये है कि इसकी remedies इतनी easy क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? A person or individual becomes a victim of a predator. Crime happens, but there are no rightful laws. Why are the parents not filing an FIR? Why is the victim not coming out and filing a report or going to the police? Because there are major flaws in male rape laws. So we've done some research, and Aisha would like to talk about how Pakistan Penal Code is absolutely silent on male rape. It is. If we see the criminal codes of Pakistan, it is flawed. With respect to women, when it comes to harassment or sexual assault, it still is very complicated because it is very difficult to prove that sexual assault has happened. But when it comes to male rape,
there is no certain law. According to the Penal Code of Pakistan, Article 375, so it mentions that if rape is done against women, so the language that is used is very feminine. She, her, woman, girl. So what you're telling that me, kind of language is so what used. you're telling me कि if a male wants to report a crime of rape, his file would not be registered under Article 375. No, because such law does not exist. Such language has not been used. So there is a no man law. cannot be raped. So there is no law to there is protect no law. the victims of male rape. No. And you were talking about Article 375 as well. So 375. So in 375, gender neutral language has not been used. Only the women have been targeted in that particular Article 375 of the Penal Code of Pakistan law. Then we come to 377. 377. So 377 article focuses on sodomy. Now, sodomy is something which is unnatural acts of sexual acts. But again, in that, the sodomy does not come under male rape. And why? Because those are voluntary acts. Okay, so Pakistan is one of those 8 countries which have homosexuality as a crime. As a crime. Which is dealt to be with death. So we have capital punishment for homosexuality, but we don't have laws We to do not protect have laws. men from rape or other vile acts. And this is obviously not the first time that such an incident has happened. We all know that all across Pakistan, we have heard stories since our childhood that such incidents happen. I remember growing up and even आपकी films में, आपकी movies में, आपका जो Lollywood hai, it makes fun of, I shouldn't be saying it, but of Pashtun community saying that they are bachebaz, ya phir they have, intimate relationship with same genders, and we often see them using the words ke aana to zara khushboo laga ke, saying to the same genders. So we know that such activities take place. We know that such, and especially in Lahore, it has become very common. Most of my university friends have told me that they have faced such incidents that people have invited them over for such acts. But obviously, they were able to protect themselves somehow. So in order to make it more unfiltered, I would like to use those words because I want to. Because how we've used these words और कैसे हमने इन वर्ड्स का जो यूजेज है इतना कॉमन कर दिया है without realizing its impact. So हम लोग its impact, exactly. A person, a man who is generally feminine looking. So the idea is I would like to use those words. The words that are very commonly used in our daily language. Boys, men in their comfort settings, they use the words like chakka. They use the words again, as you said, कि चलो खुशबू लगा के आना. And these are not the words. These are the words that are being used by everyone now, every community. Every community. And the boys use their words very proudly. Oh, तुम तो छक्के हो. Casually and proudly. तुम तो कभी आओ. There's another word which is very bad, and the word starts from G and ends with U. I don't want to use the word, but the problem is these words have become so common among men, among boys, that when they end up acting upon those, it's not a big deal out of it. And secondly, we don't have laws. The problem, Aisha, that we surface is that there is hardly a couple of organizations. I think because, again, जो हमारे आदमी है, जो हमारी strong आदमी है, who believe कि उनके साथ तो कुछ बुरा हो नहीं सकता, because always they will remain the perpetrators and they will never be the victim of sexual assault at least. So इस masculinity, इस ego ने उनको allow नहीं किया कभी भी कि वो अपने आप को as a victim treat कर सकें और उस victimization के अंदर अपने लिए कोई laws बना सकें. Because obviously पाकिस्तान की ऐसा तो नहीं है कि laws बड़ी औरतें बना रही हैं यहाँ पे बैठ के कि उन्होंने मर्दों का ख्याल नहीं रखा और उन्होंने मर्दों को include नहीं करना चाहा उसके अंदर. लॉ बनाने वाले भी आदमी हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले भी आदमी हैं, लेकिन उनकी ईगो, व्हाट आई फील
इसकी उनकी ईगो उनको अलाउ नहीं करती कि ऐसा कुछ उनके साथ हो सकता है, डिस्पाइट कि मैं ये नहीं कभी भी मान सकती कि किसी भी आदमी को एक कम से कम एग्जाम्पल तो पता ही होगी कि ऐसा हुआ है किसी के साथ. True, absolutely. But still they ignore it. And another issue that our male-dominated media has failed to highlight this issue. Very few one of the international organization and other couple of organizations which only operate on so social mainstream media has still not shown this news. Is silent because again that is not our priority. But the problem is this should be our priority because हम अपनी सोसाइटी के इल्स को जब हाईलाइट ही नहीं करेंगे तो एड्रेस कैसे करेंगे? Exactly. इसको ट्रीट कैसे कर सकेंगे? ट्रीट कैसे करेंगे? So one major problem is we need to highlight such issues. We need to talk about such issues. Talk about so that the laws are made, so that the laws are implemented. Because if I go, if जब तक औरतों ने अपने राइट्स के बारे में बात करना नहीं शुरू की थी, उनको लॉस नहीं बनाए गए थे. जब तक ट्रांसजेंडर्स ने अपने राइट्स के बारे में बात नहीं करना, तब तक 2018 तक उनके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में अपने लिए अलग से सेक्स के लिए जगह नहीं बनाई गई थी. Yes, so we urge that this issue should be highlighted, should be talked about, at least for the sake of making more laws. अगर लोगों को लगता है कि इसके ऊपर बात करने से फहाशी बढ़ती है, इसके ऊपर बात करने से कोई चीज टैबू हो जाता है, तो let's talk about it. Let's talk about these taboos. So these taboos end once and for all. Once and for all. Because if we're not talking about it, how are we going to resolve or end? जिस बारे में बात ही नहीं करना पसंद करेंगे, उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, उसका इलाज कैसे निकालेंगे? Exactly. And we बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए उसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये बीमारी एग्जिस्ट करती है. Rightly said, and we're going to continue to use this platform to highlight such issues जो mainstream media नहीं highlight करेगा. And we are going to talk about it. Trust me, and we are going to become a voice for those who are silenced, for those who are not, who issues are not taken up with the mainstream media, and we're going to do that. Till then, thank you so much. Thank you so much for watching us.